Okay, so today uh, we will be discussing about nozzles of the design pressure ratio. Okay, let me remind you what we have studied in our previous class. If you remember, we discussed about critical pressure ratio, critical temperature ratio. Okay, and similarly, we talked about critical velocity, etc. So, what is the critical pressure? That is, obviously, when the sonic velocity is obtained inside the nozzle at that particular time, the pressure value is actually the critical pressure. Okay, and if you compare that, and if you take the ratio of that critical pressure to the inlet pressure, that is your critical pressure ratio. Okay, so at critical pressure ratio, we said that we have nozzles on the design conditions. Okay, that you want certain velocity, you are decreasing the pressure. Okay, and you can get that velocity. So that is actually your on the design condition. Okay, and also the pressure at exit. Okay, that is actually in the conversion nozzle, that is your exit pressure and critical pressure, they are the same. If they are equal to the back pressure. Okay, the back pressure is, in the previous slides, if you look back to those slides, we had actually that a duct and a nozzle was there, and you can control the back pressure using a wall. Okay, if you remember, we were actually opening the wall and we were decreasing the back pressure, and at the same time the mass flow increases and the velocity of the fluid also increases. And I told you that there is a pressure value, the back pressure value, that it gives you the sonic velocity on the exit, right? um, at the critical pressure, and over there the flow is also maximum, and we are saying that that is basically the choking condition. If even you further decrease the back pressure, it is having no effect on the mass flow, right? And I told you that the upstream is at that point is blind of what is happening down there. Okay, anyway, so now you see, uh, then we have actually nozzles of the design condition. Of the design condition means that we have actually the cases of under expansion and over expansion. So what are the what are of the design conditions? When the back pressure of the nozzle is below the design value, right, the nozzle is said to be under expanded, right? And similarly, when the back pressure of a nozzle is above design value, the nozzle is over expanded. Okay, so you can say that here, uh, with the back pressure PB, okay, that is below the design value. Okay, that is less than your PC. Okay, it is critical pressure. So this is your under expanded case. And when PB, that is the back pressure, if it is greater than PC, that is your over expanded nozzle. In simple words, you can take these back pressures as your atmospheric pressure in realities. Okay, so very simply speaking, that let's say for example this is the, for example you can consider a convergent divergent nozzle also. Okay, this is convergent divergent nozzle, right? So if the pressure at exit, right, this pressure, this one pressure here, okay, you can say this is your, let's say, exit pressure. Okay, if this is equal to your back pressure, what is back pressure? The pressure over here. If this is equal to the back pressure, your exhaust will be like this. ठीक है, आपका exhaust जो है ना, it will be like this. Okay, and the velocity you want to achieve at the exit, okay, and the mass flow you want, that will be here, and you can obtain that, right? So this is your
on the design condition. Under expanded or expanded case is different, right? When the back pressure, it is actually less than the critical pressure, okay, and similar the design pressure value, critical pressure, design pressure value. And this critical, if it is, this back pressure is greater than critical pressure value, so we have under expanded cases, okay. We can look to the next slide. We will explain this more. If you see, we have uh, pressure variations for flow through a convergent nozzle, right? So this is almost the same case. If you remember previously we discussed, okay, but over here we have the fluid properties like pressure P1, temperature T1, velocity V1, RC1, etc. And over here we have P2, C2, and T2 here at the exit. Okay, so they have actually plotted the pressure variations in the convergent nozzle against this length of the nozzle, right? So this is length of the nozzle and this is pressure variation. Now remember that ideal, you can say that we have basically three types, okay. One is, I should write it like this. One is uh, let's say under expanded case, under expansion I should say, okay, when your PC or PB is equal to PC design value. Sorry, this is less than PC. And then we have over expanded case. Over expanded case, okay. And over expanded case, we have this PB, that is the back pressure. This is greater than PC. And in between these two, we have right amount of expansion, okay. So you can say this is the right amount, जिसको हम design value कहते हैं. So this is what under expansion, over expansion, and right amount of expansion, right amount of expansion, where PB is equal to PC. So we have discussed this thing earlier, okay. And the exhaust, okay, are the pressure at this exit, that is the design pressure. If it is equal to PB, that is the atmospheric pressure over here, you will be having total expansion inside the nozzle, and you can get what you want. Means you can get your required mass flow rate and your required velocity. And these are off the design conditions, okay. When this PB, that is the back pressure, okay, less or greater, so you are having of the design condition. So if you look at this thing, they have actually plotted the pressure against length of the nozzle for a convergent nozzle, right? So first you see here that actually this is the right amount of expansion. I told you, what do you mean by expansion? Expansion is basically pressure drop, right? And you know very well that if it is convergent nozzle or convergent divergent nozzle, in both the cases, that decrease in pressure is basically the reason of accelerating the fluid, right? So you should know about this. So you need to drop the pressure inside the nozzle to increase the velocity of the working fluid, right? Okay, so that pressure drop, if your PB, right, this PB back pressure is equal to the design pressure value, the critical pressure value, then you see that this is actually your nozzle, right? So this is length of the nozzle. So whole of this expansion, okay, that is inside this nozzle, right? This is actually this case. PC is equal to critical pressure, right? And this is equal to PB back pressure. जिस तरह हमने बात की, this is right amount of expansion. There is another case, this is B, right? And I told you this A and C, they are under expanded and over expanded cases, right? So you can just say that if your PB is less than PC, जिस तरह ये हमने discuss किया था, this one, right? So yes, actually the pressure from P1, what will be the pressure here? This is your inlet pressure, right? So it should decrease
inside this nozzle in order to accelerate the fluid, right? So it is decreasing. Yes, it is decreased. Okay, and it comes to the back pressure, right? Here it comes to, sorry, the critical pressure here. But you see, since PB is less than PC, so it is obviously expanding more. Okay, so that it should reach the value of PB. यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है? This is PC, right? But obviously the exhaust should be it is going to the atmosphere, so the pressure should be the same, right? So ये जो PC इससे further expansion होती है ना, that is outside the nozzle. Okay, and that is basically your under expanded cases. That the expansion is there but not totally inside the nozzle. Okay, it is, there is some expansion outside the nozzle. यहाँ पे लिखा भी है expansion outside the nozzle, so that is your under expanded case, right? Similarly, in over expansion, your PB, that is greater than PC, right? So you can see here that P1, the right away it decreases. Okay, and even before this point, this section 2 right, the expansion completes, or the expansion that is there. Okay, it attains this value. Okay, in other words, this PB जो आपके पास atmospheric pressure है, it is more than the critical pressure, so it tries to compress the exhaust. ओके, तो ये इनसाइड जो है ना, इसको कंप्रेस करता है फ्रॉम दिस साइड. अगर ये प्रेशर ज़्यादा है ना, and the jet is coming out of this section, so this back pressure, since in over expanded case it is greater than the critical pressure. Okay, this exit pressure, you can say, it is PB is greater, so it tries to compress it. Okay, and you see that the expansion takes place and it completes its decrease or decrement before the section. Okay, so this is actually your over expanded nozzle. Okay, so even if you draw this, I told you, let's say for example, for right amount of expansion, the exhaust will be like this, where PB is equal to PC. In under expanded case, the exhaust, I told you maybe earlier that the exhaust will be like this, right? This is under expansion. Okay, this is under expansion. In over expansion, में क्या होगा आपके पास? In over expansion, what happens is that the exhaust will be like this, because it actually it tries to compress the exhaust, compress this jet. Okay, so this is your under expansion, right? And this is over expansion. So if the back pressure to which the exhaust is going, which in most cases will be the atmospheric pressure, if और ये होता भी है, ठीक है, मतलब this is actually, this right amount of expansion is ideal one. Okay, it can be there, but most often we have actually nozzles of the design condition, particularly when they are exposed to the real environment like rockets and space shuttles, etc. Okay, so let's say for example, if they are moving from the atmosphere, okay, to the earth crust, so that will be your over expanded case. Okay, and here um, like if your atmospheric pressure is that is less than the critical pressure or the design value, so you can say that that is your under expanded nozzle. Okay, and sometimes there is also a discussion, sometimes we deliberately have this under expansion case. Maybe you know about this thing. जिस तरह मैंने शायद आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया भी था, if you remember that we have when the space shuttles and the rockets, when they are fired, they are deliberately designed at under expansion case, right?
तो जिस तरह मैंने बताया कि अंडर आर ओवर दे आर ऑफ द डिजाइन कंडीशन, बट समटाइम्स वी डिलिबरेटली have this under expansion case, and the reason is very obvious. Why? Because here, when it is fired, okay, this is under expansion, but as it is going in the upward direction, okay, right, it is going in the upward direction. This under expansion is going is changing from this under expansion to over expansion case. ठीक है, ये ओवर एक्सपेंशन केस की तरफ जाएगा, ओवर एक्सपेंशन केस की तरफ, राइट. So in between these two, right, like it is justified, it is moving from under to over expansion case, okay, but for some time, okay, it actually, because it will cross this right amount of expansion. जब ये under expansion से over expansion की तरफ जाएगा, so रास्ते में आपके पास right amount of expansion आती है, ठीक है. So just after firing, it gets the right amount of expansion, and this will actually give you the maximum mass flow in the backward direction, and similarly the maximum velocity of the jet in the rearward direction. And if the mass flow and mass flow rate and the jet velocity is maximum, then obviously the thrust will be maximum in the upward direction, right. So deliberately जो है ना यहाँ पे इसको under expansion केस को provide किया जाता है. Same is the case for this CD nozzle. That was the under and over expansion and right amount of expansion in convergent nozzle. And you know very well that the restriction and the limitation for convergent nozzle is that you can get maximum sonic velocity. ठीक है. So if you want this velocity beyond the sonic velocity, you need to use the convergent divergent nozzle, and it depends on the back pressure also. ठीक है. Anyway, so you see here, this is the same thing, the pressure variation for flow through a convergent divergent nozzle, right. So that was for convergent, this is for convergent and divergent nozzle. So the same way, this is the critical pressure, right, and the critical pressure here will be, most often the critical pressure in CD nozzle is basically that pressure value where the sonic velocity is obtained. So it can most often for this CD nozzle, the critical pressure is at throat, okay. It could be at a different point, but mostly it is at throat. तो throat के ऊपर जो है ना आपके पास क्या होता है, critical pressure होता है, right. And where at throat we have the sonic velocity, and at throat we have the critical pressure and critical temperature and critical velocity. And that critical velocity, sonic velocity, if you remember previously we proved that, ठीक है, ये हमारे पास sonic velocity होती है, right. Okay, so if you see here, there is an arrangement, like for example, if this convergent divergent nozzle is attached to a reservoir, okay, where we have the static pressures P naught, and we have actually this T naught, right, and 8.11, obviously there is actually pressure, let's say P1 and T1 यहाँ पे आप देख सकते हैं. And here there is actually a reservoir to which the exhaust of the CD nozzle is going, and here the pressure is controlled, okay. This is actually your back pressure, and it is controlled using this valve, ठीक है. And in the same way, if you want to know about the under and over expansion case, so this is based on this back pressure, okay. So you can now, having this valve, you can decrease this back pressure. So let's say for example, if your P1 is equal to PB, there will be no flow through the nozzle, okay. But if you decrease this PB, so there is a pressure difference, okay, and the flow will start. And you know very well that here the pressure is decreasing, right, the pressure is decreasing, right, to this throat, and the velocity increases. And then after that it actually gets its maximum velocity, okay. But it is not the sonic velocity, right, but the fluid is accelerate because this is the convergent section, this is the divergent section, okay. So for subsonic flow we have actually this thing, that is
When the flow is moving to the throat, the velocity increases, pressure drops, okay. And after this point or this throat, since this is divergent section, so the pressure increases and the velocity will decrease. So this first case is basically, our case A is sort of Venturi effect, जो आप लोगों ने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, right? Venturi effect. This is Venturi effect, that in the conversion side of the nozzle, the CD nozzle, the pressure drops to till this throat, and the fluid is accelerated, and after this we have maximum velocity, okay, at the throat. But it is not necessary that maximum velocity is the sonic velocity in this first case. And then after that, the fluid is decelerated, the velocity is decreased and the pressure is increased, right? And then after that, if you look at this case, okay, where there is some px value, any value, two values are there, right? So px, and we have a pr, two values are there, right? So if you compare these two values, okay, so this what is px value? Basically this is the value of the back pressure, okay. बैक प्रेशर की एक वैल्यू है एंड दिस इज द बैक प्रेशर की दूसरी वैल्यू है, राइट? सो means that actually you can say this is your pb, you are decreasing the back pressure, okay. So you can say this is your pb1, this is your pb2, etc., okay. You can have any value over here because you are decreasing the back pressure and you are observing that what is the effect on this mass flow and the velocity of the working fluid by decreasing this back pressure. So they are the same, pxpr, or you can say pb1 pb2. So you see that if the back pressure is greater, okay, or you can say the back pressure, this pr, if this pr, this is less than, ये back pressure previously हम इसको कहते थे, if this is less than the critical pressure, so this is your under expanded case जिसको हम C कहते हैं, this one. Expansion is there down to this point, लेकिन आपके पास क्या है कि this is PR, that is less than PC. Here you have your PC, okay, but since it should saturate and it should go to, or it should it should be equal, okay, it wants to be equal to this PR at the back pressure, so it further expands but outside the nozzle. Remember, ये जो outside the nozzle expansion है ना, it is not of any work for us, ठीक है, it cannot give us any benefit. So this is your because expansion आपके पास inside the duct होगी तब जो है ना आपके पास required velocity or required mass flow rate attain हो सकता है, ठीक है. And same is the case for the under expansion, over expansion case, where px, that is the value of the back pressure, if it is greater than the critical pressure, so what happens is that yes, you have accelerated the fluid to this point, okay, but then after that, yes, up to this point you can get the sonic velocity, okay, you can get the sonic velocity here, okay. And when in the diverging section, right, in the diverging section the pressure decreases, so obviously velocity will also increase, right? But then after that the pressure suddenly increases, okay, and that sudden increase in pressure obviously is the sudden drop in velocity, okay. So you have accelerated the fluid, okay, from let's say C1 to the sonic velocity, right, and even maybe supersonic velocity, because यहाँ पे जो आपके पास pressure drop है ना, this pressure drop up to this one, it gives you, यहाँ पे velocity का ग्राफ नहीं है वरना हम शो कर सकते थे कि this further pressure drop inside the diverging nozzle causes velocity. यहाँ पे तो आपके पास velocity जो है sonic velocity हो जाएगी, right? But after that, since the pressure drops in this diverging section, so due to that pressure drop, the velocity further increases and it goes beyond this sonic velocity, and that is your supersonic velocity. But after that, it, let's say after passing this point, it decreases, right, and at exit you are having less velocity or subsonic velocity. So I should say
हियर वी हैव मार्क नंबर लेस देन 1, ठीक है, यहाँ पे मार्क नंबर आपके पास जो है ना 1 हो जाता है, ठीक है, एंड मे बी एट दिस पॉइंट योर मार्क नंबर इज ग्रेटर देन 1, बट आफ्टर दैट, right, there is a sudden decrease in the pressure and sorry, sudden increase in pressure and sudden decrease in velocity. Increase in pressure obviously cause करता है decrease in velocity. तो उसके बाद जो है ना अगेन जो एग्जिट के ऊपर आपके पास वेलोसिटी होगी, ठीक है, दैट विल बी सबसोनिक वेलोसिटी एंड अगेन यू विल बी हैविंग मार्क नंबर लेस देन 1, ठीक है. So yes, you have accelerated the fluid up to even supersonic speed, ठीक है, बट अगेन इट इज डिसेलरेटेड. रिमेंबर, जो हम बात करते हैं ना कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज द जेट वेलोसिटी एट एग्जिट. मे बी अगर आप यहाँ पे लेट से यू हैव ऑब्टेन्ड हाइपरसोनिक स्पीड हैविंग मार्क नंबर लेट से 3, okay, but somehow it is decelerated and at the exit you are having this subsonic speed. This is of no use, right? So exit के ऊपर आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और मास फ्लो भी मैक्सिमम होना चाहिए, राइट? अच्छा, ये कम क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द शॉक वेव, ठीक है, ये शॉक वेव जो है ना यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एंड दैट शॉक वेव ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है. तो ये जो आपको सडन प्रेशर इंक्रीज नजर आ रहे हैं ना, ये या सडन वेलोसिटी डिक्रीमेंट नजर आ रहा है, तो इसकी वजह क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शॉक वेव है, ठीक है. दैट शॉक वेव फॉर्मेशन इज देयर एंड इट ट्राइज टू ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. तो ये अब ये शॉक वेव की पोजीशन ये है, बल्कि यहाँ पे उनका हम शो कर सकते हैं, वी कैन शो इट समवेयर हियर. तो दिस इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ द शॉक वेव, ठीक है. बहरहाल ये अलग डिस्कशन है. इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द मास फ्लो and at the same time the jet velocity, you need to relocate this shock wave away, or you want to take this shock wave out of the nozzle, ठीक है. और कैसे हम इसको नीचे इसको बाहर लेके आ सकते हैं? by varying this back pressure. So we are decreasing the back pressure, right, and you will see that by decreasing the back pressure there is a back pressure value where you can you can locate this shock wave, okay, away from or out of this nozzle. And if it is out of the nozzle, then actually it cannot harm us, right? So for that reason, relocating this shock wave out of the nozzle, there is a specific back pressure value, okay. And if you obtain that back pressure value, so at the exit you will be having maximum jet velocity and maximum mass flow rate, and that is the requirement, if you remember, ठीक है. ये आगे हम जेट प्रोपल्शन में देखेंगे कि क्यों ये मास फ्लो रेट और जेट वेलोसिटी हम जो है ना इंक्रीज करना चाहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, then after that, so let me summarize under an over expansion case for the convergent nozzle and convergent divergent nozzle, okay. So if the back pressure value is less than the critical pressure, we have under expanded case, and if the back pressure value is greater than the critical pressure or the design value, that is over expansion. And in between these two we have actually right amount of expansion. So nozzle of the design condition and nozzle on the design conditions. So we discussed about these things, okay. And I also told you that ideally we should have nozzle on the design condition, but sometimes we deliberately have the nozzle of the design condition, and I gave you the example of under expanded nozzle in case of the rocket initial firing, okay, right. Now if you understand that thing, then we have some facts about the nozzles. These are actually simple empirical formulas. Most of them you will also be aware of these things. Maybe in the we discussed these things in the previous chapter. So nozzle efficiency is defined as what? The ratio of the actual enthalpy drop. Nozzle में क्या होता है? Enthalpy drop होता है, ठीक है, to the isentropic enthalpy drop between the same pressures.
Okay, so due to friction between why this actually the losses are there. The losses are due to friction, and the friction is between what, the fluid and the walls of the nozzle. Okay, so fluid and walls of the nozzle, and within the fluid itself, in between the layers of the fluid. Okay, due to the friction, the isentropic behavior changes to non-isentropic behavior. And when there is actually this deviation from ideal to real and practical behavior, obviously there is efficiency. And what is our where this deviation takes place in the nozzle, so that defines the nozzle efficiency. The expansion process is irreversible, although still approximately adiabatic. ठीक है, the process is irreversible. Adiabatic का क्या मतलब है कि आपके पास जो है ना, this friction loss is very very small, so for that reason you can consider this as adiabatic process. There is no heat gain or loss. In the nozzle design, all the calculation are based on the isentropic flow. We discussed this previously, right? PV gamma is equal to constant. ये हमने ये किया था. अच्छा, ये बेसिकली छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं. Why we are discussing these things? Because if you remember, I think in the first or second slide in this particular chapter, I told you, and we studied some assumptions. Okay, and what are those assumptions? One of them was what? We are considering this isentropic process, or reversible adiabatic process. So that was an ideal case, and that was an assumption. But if you want to put more precision to your calculation and your analysis, then you do, and you carry out your analysis based on this isentropic process. लेकिन फिर क्या करें आप? After that you can include this nozzle efficiency to make um, the calculation precise ones. ठीक है, तो इसलिए जो है ना, हम बल्कि यहाँ पे लिखा भी शायद है, all the calculation are based on isentropic flow. Why? Because it makes the process is very simple. ठीक है, because if you have this isentropic process, ठीक है, then you can relate temperatures ratios to pressure ratios, and similarly velocities ratio to pressure ratio, etc. So you need to know about the process that is taking place inside the nozzle. Okay, so they are saying that all the calculation are based on the isentropic process, even the formulas that we developed and derived based on the isentropic process. Okay, and that is a valid assumption, because I told you that this friction loss, and this, due to this friction, okay, it causes irreversibilities. Okay, that friction and that loss and gain of heat, it is very very small and negligible. So that is a valid assumption. But even if you want to make the calculation more precise, so yes, you can take those things into account, and then we make fraction allowance by using the coefficient r and efficiency. ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग दिस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आपके पास अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू जो है ना, वो आती है x. ठीक है, based on this assumption that we have isentropic process. So if there is a deviation from isentropic process, you can just multiply this with the nozzle efficiency. Let's say for example 0.98 or something, or 95, etc. So it will give you what? It will give you the exact and precise answer of that particular quantity for which you found out the value. ठीक है, अच्छा, तो by the definition, this expansion inside the nozzle. ठीक है, this is actually the phase diagram. This is for vapors and this is for perfect gas. ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था. Actually these superheated region में जो है ना, आपके पास यही चीज़ होती है. ठीक है, vapors में जो है ना, आपके पास ये region होता है. Anyway, so if you talk about the vapors, 1 to 2 is expansion inside the nozzle, and that is the real expansion. ठीक है, 1 to 2 is isentropic expansion. ठीक है, and same is the case for here. 1 to 2 is for perfect gas. ठीक है, 1 to 2 is the isentropic expansion inside the nozzle, and 1 to 2 is the real expansion. And what is that nozzle efficiency then? That is what? That is the actual enthalpy drop. ठीक है, divided by the this isentropic enthalpy drop. ठीक है, तो यहाँ पे let's say for example if you have H1 here enthalpy and you have H2 here. ठीक है, and here you will be having H2S. So based on these three, you can have this
this thing. ठीक है. So H1 minus H2 is your actual enthalpy drop. H1 minus H2s is the isentropic enthalpy drop. ठीक है. And you know ये simple है. You can relate this H is equal to Cp and T के बराबर होता है. बहरहाल you know this very well from the previous chapter. You can convert these enthalpies into CpT1. ठीक है. बहरहाल ये आप खुद कर सकते हैं. Cp जो है ये cancel out हो जाएगा and this is your nozzle efficiency, right? Okay, they are saying that if the actual velocity at exit from the nozzle is a C2. Now you see, look, let's say for example you have this nozzle, right? For example, you have this nozzle and you want that the exit velocity should be C2. Let's say that C2 is equal to x meter per second. Okay, this is your requirement. And you are considering that PV gamma is equal to constant. This isentropic process inside this nozzle, right? But in actual, what happens is that this nozzle is not 100% efficient, right? So there is a deviation from this isentropic behavior. Okay. So what this C2 in actual will be, आपके पास actual C2 क्या होगा? That will be x multiplied by efficiency of the nozzle. Okay, I should say this efficiency. Okay. So you know you are getting C2, let's say C2 bar. Okay, this C2 bar that will be different and that will be less than this C2. Okay, and your requirement is your C2. So how to obtain this? आप फिर क्या करेंगे कि you need to further expand this a little bit so that you can expansion क्या मतलब है कि you need to expand it a little more so that you can reach that velocity that you want. ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेंशन थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ना, प्रेशर ड्रॉप होगा, आपके पास वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो इसी चीज को ये डिस्कस करता है. व्हेन द फ्लो इज आइसेंट्रोपिक, तो ये अगर आपके पास रियल है ये C2 है एंड इफ द फ्लो इज आइसेंट्रोपिक यू हैव C2s. ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना, ये दिस इज एक्चुअली योर, ये जो C2 है ना ये असल में C2s है, ये मैं आपको बता रहा था. एंड दिस C2 बार जो मैं बात कर रहा था, दिस इज योर दिस थिंग. देन यूजिंग द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन ईच केस वी हैव. अच्छा, ये अभी जो है ना वेलोसिटी कोएफिशिएंट की तरफ जाएगा. तो बहरहाल you can see that this is actually the very famous energy equation है आपके पास. ठीक है, इनलेट के ऊपर आपके पास टोटल एनर्जी है एंड ये जो है ना आपके पास या एनर्जी for isentropic process and this is for isentropic and this is for non-isentropic process. ठीक है, so H1 C1 square by 2 plus H2s plus C2s square by 2. ठीक है, and if you know this will be H1 minus H2s, you can get this one by simplifying this thing, right? And similarly for this H1 plus C1 square is equal to H2 plus C2 square. ठीक है, that is your for real process. So H1 minus H2 यहाँ से आपने ले लिया और H1 minus 2H यहाँ से आपने ले लिया and you can put these values over here and simplify, so you will get this thing. ठीक है, and I told you this is your nozzle efficiency. So if nozzle efficiency, if you want this in terms of temperatures, this is having this formula. If you want this in terms of enthalpy, this is having this relationship. And if you want that nozzle efficiency in terms of the velocities, so you have actually this relationship. And if you know, we discussed that this C1 is equal to, in most of the cases, this is 0 as compared to what? As compared to the exit velocity. अच्छा, why ये exit velocity जो है ना हमारे पास, हम कहते हैं कि भाई जो velocity at inlet है ना, this is very 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 small as compared to jet velocity, तो इसलिए जो है ना इसको हम 0 लेते हैं. So if you take these things 0, तो आपके पास जो nozzle efficiency होगी that will be C2 square by C2s square. What is this? This is the velocity of the working fluid at exit when the process is real, and this is the velocity of the working fluid at exit when the process is isentropic, and it will give you the nozzle efficiency. तो अगर आपके पास
velocities जो है available है, या you can make the velocities, you can make them known easily. You can use this relationship if somehow with the use of thermocouple etc. If you can find out the temperatures easily, you can use this relationship. And somehow if you want, if you can get the enthalpies easily, you can use these relationships. So this is actually, this gives you a flexibility. Okay, velocity coefficient जो है ना, it is the ratio of actual exit velocity to the velocity when the flow is isentropic between the same pressure. The same thing, okay, I told you कि if you take the square root of this, आपके पास C2 by C2s. What is this? This is the velocity when the process is real, and this is the velocity when the process is isentropic. So in as I told you, there will be a difference. ठीक है, ये जो आपके पास actual C2 है ना, this C2, right, the actual, this will be less than, a bit less than this C2s. ठीक है, because the losses are there. ठीक है, so velocity coefficient is a square root of the nozzle efficiency when the inlet velocity is assumed to be negligible. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, previously हमारे पास efficiency जो है वो ये थी, ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेना नोजल एफिशिएंसी का, तो यू कैन गेट दिस C2 by C2s. ठीक है, दैट इज योर इलास्टिक कोएफिशिएंट. तो ये इलास्टिक कोएफिशिएंट जो है ना, क्या है, ये यही इलास्टिक कोएफिशिएंट है, राइट. लेट्स से फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कोएफिशिएंट, वेलोसिटी आई शुड से वेलोसिटी कोएफिशिएंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज योर 0.98 फॉर एग्जांपल. ठीक है, आगे शायद एग्जांपल वगैरह में डिस्कस किया भी है. दिस वेलोसिटी कोएफिशिएंट इज योर 0.98 and your so by considering the isentropic process, basically जो हम previously हमने डिस्कस किया था ना कि we have actually the value of C2. Okay, that is not C2, that is basically your C2s. Okay, so if you want to find out C2, ठीक है, जो एक्चुअल है, you need to multiply this C2s with a 0.98. It will give you the precise value of this C2, right? तो ये जो है ना हमारे पास वेलोसिटी कोएफिशिएंट है. Then after that we have actually coefficient of discharge, right? Coefficient of discharge क्या है? Mass flow rate when the process is real and the mass flow rate when the process is isentropic. So the ratio of these two is your coefficient of discharge. So ratio of actual mass flow through the nozzle, okay, m dot to the mass flow which would be passed if the flow were isentropic. ठीक है, तो रियल प्रोसेस में जो मास फ्लो है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो मास फ्लो है, that is basically your coefficient of discharge, right? So these are actually some definitions. You can look at your book also, but simple ones. Now based on these things you can solve this example. This example is actually, you know, solved example. Gas is expanded and propulsion nozzle from 3.5 bar and 425 degree C pressure temperature down to a bake pressure. The bake pressure is actually known to you at the rate of, this is mass flow rate, taking coefficient of discharge. ठीक है, ये coefficient of discharge है अभी जो हमने पढ़ा, and nozzle efficiency of this thing. ठीक है, you can see that the losses are very small. Okay, calculate the required throat and exit area. Throat, ठीक है, I should say AC, and exit area, that is A2. ठीक है, you need to find out these. For the gases, take gamma is equal to this and Cp is equal to this. Assume that the inlet velocity is negligible. C1 जो है ना, अच्छा इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे ही मैं आपको बता दूं कि this is actually assumption that we are taking the inlet velocity as negligible, right? So at some point maybe in this lecture we will see that we will not be assuming this. ठीक है, because particularly in jet propulsion, when the rockets are fired, okay, or the ramjets are fired and the turbojets are moving, so the inlet velocity over there is not negligible. ठीक है, जहाज जा रहे हैं ना आपके पास, तो जिस वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं उसी वेलोसिटी के साथ एयर इन होता है, तो उस वेलोसिटी को आप नेग्लिजिबल नहीं कह सकते. ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन हैव दैट assumption. Anyway, ये जो है ना, these are actually the and this is actually the data that we extracted from the statement, and what you need to calculate throat and exit area. I told you throat and exit area. So it's actually summarized over here how you can find out the exit area.
ठीक है, ये एग्जिट एरिया, सॉरी थ्रोट एरिया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस इज योर, ये उसी वहाँ पे ये, अच्छा ये दिस इज एक्चुअली सेम formula. Area per unit mass flow rate, if you remember, that is your specific volume, and this is the velocity. So this is m dot s, critical velocity, sorry, this specific volume, critical specific, and this is your uh, this is a critical velocity. Okay. Now they are actually explaining this, okay, how to find out the critical volume. So RTC by PC, okay, and how to find out this CC? So this is 2H1 minus HC, okay. So how to find out this? This PC by P1, you know very well. This is critical pressure, है ना? Inlet pressure is known to you. 2 by gamma plus 1, gamma by gamma minus 1. So बहरहाल ये आपके पास जो है ना, this is your critical pressure ratio and this is your inlet pressure. So it gives you the critical pressure, and the process is isentropic. So, and this is actually the critical temperature value. So critical pressure is known, critical temperature is known, R is constant. Okay. So because R you can get even from here. Cp is known, gamma is known, so you can find out the value of R from here for this particular case. Okay. So R is this one. So if these three things are known to you, it means that you can find out the value of specific volume at throat. And how you can find out the value here? So you can see that this is actually the mass flow, actual mass flow जो है ना यहाँ से, क्योंकि ये आपके पास this is your isentropic mass flow. You can find out the actual mass flow from here, right? And then this is your VC, and from here you can find out the value of CC. ठीक है, that is your what, CP T1 minus T2. ठीक है, TC. So T1 भी आपके पास है, TC भी आपके पास है, बहरहाल आप जो है ना इसको कर लें. So ultimately, if you use this formula, the same one, okay. So you have m dot s, you have this and this, and you can find out the value of um, this area at throat, that comes out to be 0.0339 square meter. ठीक है, ये थ्रोट की पर आपके पास. सिमिलरली आप जो है ना, you can find out the value of, and you can calculate the value of the area at exit. That will be m2 dot specific volume at exit and velocity at exit. ठीक है, and how to find out V2? V2 is equal to RT2. How to find out this? So 2 CP T1 minus T2. T1 is with you, CP is with you, 2 is constant. You need to find out T2. ठीक है, तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं इसको, राइट? Because we have nozzle efficiency, आपको पता है ना, and that is having this formula. So there the only unknown is T2. ये आप find out कर लेंगे, ठीक है. And from here R and T2 and P2 they are known to you, ठीक है. तो you can find out the value of back pressure, आपको पता है. तो this is your V2, ठीक है. तो यहाँ पे जो है ना, अंडर और एक्सपेंशन केस की बात नहीं हो रही, बट बैक प्रेशर इज इक्वल टू द एग्जिट प्रेशर, दैट्स इट. ठीक है, और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस C2 आल्सो. ये C2 है, तो यू हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम C2, ऑल दीज आर एक्चुअली नोन टू यू, सो यू कैन फाइंड आउट. अच्छा, ये जो है ना, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से जो है ना, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M2 डॉट आल्सो, that is your this thing. So you can find out. अच्छा, mass flow जो है ना, वो हम mass flow inside the nozzle is considered as constant due to continuity equation. Although there is a difference, because of spraying fuel, if it is there, for example, inside अगर आपके पास है, लेकिन if you have pure air, so mass flow जो है ना, उसको हम constant वो consider करते हैं, ठीक है. तो इसलिए जो है ना, दिस इज एक्चुअली M2 डॉट, एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एग्जिट एरिया. ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू दैट थ्रोट एरिया इज क्रॉस सेक्शनल, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, एंड एग्जिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज विद यू, एंड दिस इज योर इनलेट एरिया. सो यू कैन इवन शेप द नोजल. ठीक है, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल को जो है ना, सीडी नोजल को आप शेप भी कर सकते हैं, राइट. एनीवे, इसको आप देख लें. ओके,
Now discussing these things, let us look at this stagnation conditions. Okay, what are the stagnation conditions? Actually, by condition here we mean states. Okay, and the state we are talking about, the state variables temperature and pressure mostly. Okay, so and even velocity etc, specific volume भी आप ले सकते हैं. So these are actually we are talking about conditions से जो है ना, हमारा मतलब ये है कि we are talking about temperature, pressure, velocities and specific volumes etc. So stagnation condition शायद आप लोगों ने थोड़ा देखा भी होगा, इसका नाम सुना भी होगा. The state attained by the fluid when it is decelerated isentropically to zero velocity. ठीक है, एक आपके पास static pressure होता है. One is static pressure, static temperature. The other one is stagnation pressure and stagnation temperature. ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि हमारे पास let's say for example this is your let's say a reservoir. Okay, where the flow is coming from that reservoir, and we have the inlet pressure P1, inlet velocity V1, and the inlet temperature at this point is T1. Now the flow is like this. Okay, and somehow you brought this velocity V1 to 0 by having this at this reservoir. Flow khatam kar diya, and you have actually this reservoir over here. Now, so you actually decelerated the working fluid and you make this flow velocity equal to what? 0. ठीक है, जब आपके पास ये velocity state ये 0 हो जाएगी ना, at that point the pressure and the temperature of the working fluid, they are no longer static pressure and temperature, rather they are stagnation pressure and temperature. ठीक है, सो जहाँ पे जो है ना सी और वी दोनों वेलोसिटी के लिए जो है ना हम यूज करते हैं, तो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिखा है ये चीज. ठीक है, ओके, सो यू सी हियर दैट एनर्जी इक्वेशन, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं. अच्छा, कि ये इफ यू लुक एट द एनर्जी इक्वेशन. अच्छा, चले यहाँ पे मैं आपको बता दूं why we are discussing the stagnation condition, these stagnation conditions, because later on we will be talking about jet propulsion. Okay, and if you remember, even in the nozzles also we are considering that C1 is equal to 0. यही हम कंसिडर कर रहे हैं ना, अभी तक ये कंसिडर कर रहे थे. अच्छा, but in essence, particularly when you are having ramjets, turbojets and the aircraft, so this C1 is not 0. ठीक है, जिस velocity के साथ आपके पास जो aircraft है, it is flying at that velocity, the air is coming to the engine and to the the compartment. So that velocity is not negligible as opposed to or as compared to the jet velocity. So for that reason we are basically moving from this assumption to reality. So that is basically you need to know about the stagnation condition. One second thing is that, remember, ये आगे हम ये फार्मूले हम देख लेंगे, डिस्कस करेंगे, but let me give you the overall sense. Remember that अच्छा, चलिए मैं सिंपली एक आपको बताता हूँ कि if you remember, let's say we talked about the isentropic efficiency of the compressor in the previous class. Okay, and that was what? That was the work consumed by the compressor when the process is isentropic. Okay, so I should say T2s minus T1. That was actually the work, and this is T2 minus T1. This is the work consumed, CPU cancel out ho gaya na. So this is the work consumed by the compressor when the process is TL. This is the work consumed by the compressor when the process is isentropic. Okay, and the ratio of these two is your isentropic efficiency, right? Now, what is this T1 and T2 and this T2s etc.? These are basically static temperatures, and even if you have some relationship for pressures, those were for जिस तरह हमारे पास P2 by P1 etc. है, these are basically static pressures. ठीक है, so previously
I'm telling you that we were talking about the static pressures and static temperatures. Okay, but practically the cases are not like this. Okay, let's say for example, very simply speaking, if somehow you want to find out the value of the isentropic efficiency of the compressor, you need to know about what? You need to know about T2s, you need to know about T2, and you need to know about T1. Okay, let's say you measure this T2. So how you will measure? Using thermocouples. Okay, so thermocouple are, okay, let's say for example you want to measure P2 for example. Okay, so how you will measure? Using some device. Okay, so जो आपके पास एयरक्राफ्ट होता है ना, over there for temperature measurements we have actually thermocouples, thermometers, एंड फॉर प्रेशर मेजरमेंट वी हैव पीजो ट्यूब्स. ठीक है, पीजो ट्यूब नाम आपने सुना होगा. जहाज के जो है ना कॉकपिट के दोनों तरफ आपके पास जो पीजो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, वो हाइट भी मेजर करते हैं हमारे पास, और जो है ना दूसरा प्रेशर मेजरमेंट भी करते हैं. ठीक है, कि प्रेशर जो है ना उस वो हमारे पास क्या है यहाँ पे. सो एंड यू नो वेरी वेल दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज योर पीजो ट्यूब फॉर एग्जांपल. तो पीजो ट्यूब क्या करता है? द एयर इज कमिंग हियर and it is decelerated and the velocity is zero in this column, and the it is making this thing zero. Okay, so at this point then the pressure value that you are measuring, that will be what? That will be stagnation temperature, stagnation pressure. Okay, right? And similarly, if you insert thermocouple, okay, so the layer of the working fluid, it will touch, okay, or it will strike the thermocouple, and when it will strike the thermocouple, its velocity becomes zero. Okay, so in other words I should say that thermocouple is basically measuring stagnation temperature. Okay, stagnation temperature जो है ना, it turns the working fluid to stop and then it is measuring the temperature. ठीक है, तो इसको जो है ना हम कहते हैं कि ये मेजर करता है स्टेगनेशन टेम्परेचर. ठीक है, और जो प्रेशर है वो भी स्टेगनेशन प्रेशर जो है ना मेजर करता है. हाउ टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर या स्टैटिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ना, यू नो वेरी वेल दैट इफ यू वांट टू मेजर द स्टैटिक temperature of this working fluid, you need to move the thermometer with the same velocity that the flow is having. ठीक है, तो स्टैटिक टेम्परेचर अगर आपने मेजर करना है ना, तो आप जो है इस वर्किंग फ्लूइड के साथ साथ इस थर्मामीटर को ऐसा चलाएंगे ताकि इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो. ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब कि यू आर नॉट ब्रिंगिंग द फ्लो और दिस वर्किंग फ्लूइड टू रेस्ट. ठीक है, ये रेस्ट में नहीं, तो ये आपने इसको इसके साथ चलाना होगा. ठीक है, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो इन अदर वर्ड्स, बल्कि यहाँ पे शायद कहीं पे मैंने लिखा भी होगा कि ऑल द मेजरिंग डिवाइसेस दे आर एक्चुअली मेजरिंग द स्टेगनेशन कंडीशंस रादर देन स्टैटिक कंडीशंस. तो अगर आप थर्मोकपल ले लें या पीजो ट्यूब वगैरह ले लें, तो ये मेजरिंग डिवाइसेस हैं. दे आर ब्रिंगिंग द वर्किंग फ्लूइड to zero velocity and measuring the temperature and pressure accordingly. ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेगनेशन टेम्परेचर और स्टेगनेशन प्रेशर को मेजर करते हैं. तो ये आपके जहन में हो. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर यू नो दैट स्टेगनेशन कंडीशंस. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेगनेशन कंडीशन ही है ना, राइट? ओके, सो दिस इज योर एनर्जी इक्वेशन, राइट, फॉर दिस वन. तो एनर्जी इक्वेशन क्या है आपके पास? H1, ये भी हमने देखा. अच्छा, H1 प्लस एनर्जी एट इनलेट, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? सो एनर्जी एट दिस सेक्शन will be equal to energy at this section will be equal to energy at any other section. ठीक है, सो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. तो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H0 प्लस V0 स्क्वायर बाई 2. बहरहाल ये V0 जो है ना, ये हमारे पास जीरो है, सो दिस होल टर्म विल बिकम जीरो एंड यू विल सी दैट योर दिस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H0, राइट? एंड दिस इज यू नो वेरी वेल H1 इज इक्वल टू व्हाट?
H1 is equal to Cp T1 and H0 is Cp T0. Okay, so you just need to put them over here and simplify. You will see that your T0 is equal to T plus C square by 2Cp. So this is what? This is the static temperature. This is stagnation temperature, right? T naught is what? Not जो है ना या T0 जिसको आप कह सकते हैं. This is used for stagnation temperature. T naught that we are basically measuring. Our thermocouple is measuring is equal to static temperature plus this term. And what is this term? This is C square. This is velocity. ठीक है, ये velocity है. Velocity here. Velocity sorry, this is actually v1, this velocity. Okay, so this c square divided by 2cp, and this is actually known as temperature equivalent of velocity. वो जो velocity आपने जीरो की है ना, velocity जो आपने जीरो की है वो velocity कहाँ गई? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक that is converted to temperature. ठीक है, so इसको हम कहते हैं temperature equivalent of velocity, right? So most of the cases, बल्कि यहाँ पे शायद आगे लिखा भी है कि this term is actually very small. So in most of the cases it is neglected. What is this? This is C. And what is C? C is your initial velocity. ठीक है? So yes, if your initial velocity is approximately equal to 0, ठीक है ना? Initial velocity is approximately equal to 0, you can say that this whole term is 0. So your static and stagnation temperature are almost the same. But in reality, if this is not the case, that C, that is the inlet velocity, it is not equal to 0, but it is having some appreciable value. ठीक है, जो कि हमारे पास होता है जेट प्रोपल्शन में. ठीक है, पर्टिकुलर रेम जेट में. तो वहाँ पे जो है ना, you cannot neglect this term. And there will be having, this will be your C1 square by 2. So यहाँ पे जो आपके पास term है ना, you cannot neglect that. So this is basically your temperature equivalent of velocity. ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये जो है ना आपके पास क्या होगा? In order to find out the stagnation temperature, you need to add this temperature equivalent of velocity to this static temperature. ठीक है, anyway. Then we have actually in the same way stagnation pressure भी हमारे पास होता है. ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास stagnation temperature है, we have this stagnation pressure. ठीक है, and the same is the case over here, that the stagnation pressure P naught of a gas is defined as the pressure the gas would attain if brought to rest isentropically. जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि fusitives में जो है ना, if it is brought to rest, right, the working fluid, and at that time the pressure that we are measuring will be the total pressure or the stagnation pressure. And how you can find out the value, ये calculate करके आप बहरहाल कर देंगे. P naught by P isentropic process है ना, so P naught by P is equal to T naught by T and gamma by gamma minus 1. isentropic process है या isentropic flow है, तो इसलिए जो है ना ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है. T naught by T1 जो है ना अभी आपने देखा. ठीक है, T naught की क्या वैल्यू है? You can put the value of T naught over here. ठीक है, T naught by T1 की वैल्यू जो है ना यहाँ से आप पुट कर सकते हैं. From here you can put the value of this one. ठीक है, तो बहरहाल जब आप पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो अल्टीमेटली स्टेगनेशन प्रेशर इज इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर प्लस दिस इज इसको हम वेलोसिटी हेड कहते थे, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, इन फ्लूइड मैकेनिक आल्सो. So this is static stagnation pressure, this is equal to static pressure, and this is your velocity head, or you can say that this is your total head, this is dynamic head, right, and this is your velocity head. ठीक है, तो ये बहरहाल static आप ले सकते हैं. So again it is actually it depends on this C. If this is negligible, you can neglect this term and they will be the same. But if it is not negligible, then obviously they are different. Okay, and P naught that will be greater than static pressure. ठीक है, तो ये precision के लिए हम इस तरह करते हैं.
ओके, सो यहाँ पे शायद मैंने प्रैक्टिकली स्टैटिक प्रॉपर्टीज ये मैंने आपको बताया। अच्छा, प्रेशर टेम्परेचर आर डिफिकल्ट टू मेजर, मैंने आपको बताया था। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू मूव द मेजरिंग डिवाइस विद द सेम स्पीड with which the flow is or the working fluid is moving. ठीक है, that is not practically possible. So in flow through the nozzle we are considering the static properties. ठीक है, we have considered the static properties. ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, चाहे आपके पास ये acentropic efficiency of the compressor की मैंने आपको मिसाल दी। even if you look back to this chapter 10, okay, initial slides, we were having these equations, okay. I don't have those slides were there, you can just look back to those, and we were having actually what we were having, 2 cp t1 minus t, ठीक है। but here they are saying that indeed they are what, they are stagnation ones, ठीक है। so they are just saying that by defining the stagnation conditions, the stagnation temperature and the stagnation pressure over there, okay, you need to correct those formulas a little bit, ठीक है। तो वो क्या है, the equation derived previously can be used with p, previously हमारे पास क्या था, p1, so you need to have this p naught 1 because this is stagnation, and similarly you need to have this t naught 1, ठीक है। तो सिंपल केस हमने डिस्कस किया था। नाउ यू कैन एड मोर प्रिसिशन टू इट एंड यू कैन हैव सब्स्टिट्यूटेड फॉर p1 एंड t1, राइट। सो ये प्रीवियसली फार्मूला हमने डिराइव किया था 10.4, that formula was c, that is the exit velocity is equal to 2cp t1 minus t ये था, तो you need to have this t naught 1, yeah, stagnation temperature, thank you। And if you remember, we talked about the critical pressure ratio, that was pc by p1, do you remember that, right? We were having 2 by gamma plus 1, gamma by gamma minus 1. Now this is pc by p naught 1, and same is the case for the temperature also, okay। तो ये मैंने आपको बताया था, this is actually that note that simply we can say that the measuring devices measures stagnation properties, ठीक है। तो अगर आपके पास पीसी ट्यूब्स हो या थर्मोकपल्स हो तो ये मेजर करते हैं क्या चीज़ें, ये जो है आपको स्टेग्नेशन टेम्परेचर एंड स्टेग्नेशन प्रेशर जो है ना वो मेजर करके देते हैं। यस, इफ यू हैव स्टेग्नेशन टेम्परेचर, the measured temperature, and you know about the initial velocity, ठीक है। तो अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और आपने टेम्परेचर को मेजर किया है, ठीक है, so yeah, and you can find out, you can calculate and you can find out the value of T1, right, and you can use the same formulas, but if you alter those formulas for this case, so it will be better, ठीक है ना। यानी आपको अगर T01 का पता है and you know about the initial velocity also, ठीक है, so from this can you find out this T? Yes, because Cp is known, 2 is constant, and if you know about C and T naught, you can find out T, ठीक है, you can readily use those formulas over there। तो ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बनती है, तो इसलिए जो है ना हम डायरेक्टली इसको वो करते हैं। बात समझ आ गई मेरी? मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू टेक दिस लेट्स से TC बाई T1 एंड यू नो अबाउट T01 ये आपने किया है, तो या तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करें, या अगर आपने वही यूज़ करना है लेट्स से, विच इज़ नॉट द प्रैक्टिकल केस, बट इफ़ यू वांट टू सॉल्व using that formula, you can do that, ठीक है। T01 is with you and C is with you, you can find out T1 from there and you can use this formula, okay। so these are actually the stagnation condition। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि we discussed about the isentropic flow and we neglected the inlet velocity, but in reality the flow is non-isentropic. Yes, the deviation is very low, but it is not non-isentropic, okay, and irreversible. And the inlet velocity in all the cases, it is not negligible, okay, particularly I told you in case of jet propulsion. So for that reason you need to have a comprehensive relationships, okay, and comprehensive formulas, so that you can be very much close to the precise values as possible, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। Now after that, let us quickly look at the jet propulsion। I told you that one of the application of the nozzle is in the jet propulsion। So what is jet propulsion? Jet propulsion is the propulsion of an object
in one direction produced by ejecting a jet of fluid in the opposite direction, right? इसकी simple example जो है ना हमने balloon की ली थी, right? If you have this balloon fill of this compressed air, okay, so the air is, let's say, ejecting in this direction, there will be a propulsion and propulsive force produced in this direction, okay, so it can move this balloon to this direction also. This is a very simple example of propulsion, and it is using obviously Newton's third law. Okay, now, but obviously we are talking about this jet propulsion in some practical cases. So if you look at the turbojet engine or the turboprop engine, what happens is that there the we have the air inlet velocity. Okay, this is the aircraft velocity, and this is the air velocity. Because the velocity with which the aircraft is moving, with the same velocity, the air will be entering this you know turbojet engine, okay, and this is your jet velocity. Okay, so the aircraft velocity, and this is the jet velocity. And similarly here also, this is the aircraft velocity and this is the jet velocity in turboprop. Okay, so this is actually flow through a turbojet and turboprop engine, right? So if you see here, thrust per unit mass flow rate. Okay, by thrust actually we mean force in the forward direction. That is basically rate of change of momentum. ठीक है, तो यहाँ पे जो thrust produce होता है ना, due to Newton's third law, that is purely because of what, ये यहाँ पे हम discuss करेंगे. Later on we will also be discussing about pressure thrust, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना, thrust is your mostly your momentum thrust. Momentum का क्या मतलब है कि the air, let's say for example, the air that is entering to this conduit having this CA, let's say equal to x, okay, and you have accelerated this inlet the working fluid, you have accelerated that and you get this jet velocity. Let's say this is y, and you know very well that this y is very much greater than this x, right? So in other words, by doing this you have changed the momentum of this working fluid. ठीक है ना, इसका मोमेंटम आपने ज्यादा किया है. तो दिस चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू गिव द फॉरवर्ड थ्रस्ट टू द एयरक्राफ्ट, आइदर टर्बोजेट और टर्बोप्रॉप. बात समझ आ गई आपको? तो यहाँ पे जो है दिस इज यहाँ पे ये क्या है, पर यूनिट मास फ्लो रेट है. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा किया था आसानी के लिए, ताकि आप कहेंगे कि दिस इज बेसिकली सिंपल वेलोसिटी डिफरेंस. ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंस है. यहाँ पे आप देख लें, पी जे इज द मोमेंटम ऑफ द जेट, दैट इज एम डॉट सी जे, एम वी जे हमारे पास जो फार्मूला है ना, और ऑफ दिस पी ए इज एयर मोमेंटम एट इनलेट, दैट इज एम डॉट सी ए. तो अगर ये आप पी जे चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर पी जे माइनस पी ए आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो एम डॉट दैट इज योर सी जे माइनस सी ए होगा. ठीक है, और ये आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना, दैट इज बेसिकली योर थ्रस्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज योर थ्रस्ट. ठीक है, तो अच्छा ये भी आप थोड़ा सा याद रखें कि ये असल में जो है ना, ये m1 डॉट होगा एक, और दूसरा होगा m2 डॉट. दे आर डिफरेंट अ लिटिल बिट. व्हाई? बिकॉज हियर वी हैव एयर, लेकिन एग्जिट के ऊपर ये सीजे, ये अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे कंबशन टेक्स प्लेस, राइट. सो यहाँ पे आपके पास m2 होगा. देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन दिस मास फ्लो रेट, बट वी आर नेग्लेक्टिंग दैट. ठीक है, फॉर दैट रीजन this they are actually considered as the same and taken as m dot. तो m dot को जो है ना हम कॉमन ले लेते हैं, m dot, and we have cj minus ca, right? that is your thrust या फोर्स जिसको आप कह सकते हैं. तो ये आपको बता रहे थे, दिस इज पर यूनिट मास फ्लो रेट है ना, तो ये यहाँ पे m dot आ गया, और ये कहता है कि दिस इज इक्वल टू 1. इसलिए जो है ना आपके पास जो थ्रस्ट है या फोर्स है
दैट इज इक्वल टू सी जे माइनस सी ए। यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको, दिस इज सी जे माइनस सी ए, राइट। अच्छा चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वो एक चीज हम डिस्कस कर लें कि यू नो देर आर टू थिंग्स, राइट। इफ यू वांट मोर थ्रस्ट, देर आर टू थिंग्स, you can capitalize and you can maximize the mass flow, ठीक है। मास फ्लो को अगर आप इंक्रीज करें ना, एंड हैव सफिशिएंट सी जे माइनस सी ए, मीन्स कि मास फ्लो को मैक्सिमाइज करें, मास फ्लो रेट को, दैट यू आर पुशिंग इन द रियरवर्ड डायरेक्शन, and have, you know, obviously remember this cj will be all the way greater than ca। अच्छा ये ज्यादा होगा इससे, ठीक है। वाई, बिकॉज यू नीड टू क्लियर द कंड्यूट। अगर ये सी ए जो है ना, इससे सी जे इज लेस देन सी ए, तो ये कंड्यूट पे सारा एयर भर जाएगा, या निकलेगा कैसे, ठीक है। तो सी जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी ए, ये एक बात है। बट दिस पेरेंट फार्मूला, यहाँ पे आप इस चीज को थोड़ा सा देख लें कि देर आर टू, बल्कि यहाँ पे ये दो गिवन भी है, टर्बोजेट एंड टर्बोप्रॉप, ओके। सो द फोर्स एंड द थ्रस्ट दैट इज पर यूनिट मास फ्लो रेट, बल्कि पर यूनिट को नहीं हम लेते, दिस इज एम डॉट, and this one is a Cj minus Ca, right? There are two things. If you maximize this difference, right? अगर इस जेट को आप जेट वेलोसिटी को इंक्रीज करें, मैक्सिमाइज करें, ठीक है, एंड हैविंग यू नो a constant and normal mass flow rate, ठीक है। We are not maximizing on this one, but we want to have more momentum, okay, or velocity you know difference. In other words, you can accelerate the fluid more and more, ठीक है। So you can maximize this term and you can maximize the thrust, ठीक है। And even down there you will also see कि you can maximize this power, thrust power जिसको हम कहते हैं, ये thrust force है, thrust power you know very well, P जो है ना, P आपके पास F डॉट P के बराबर होते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। तो इफ आपके पास क्या है, दिस इज योर सी जे पर यूनिट मास फ्लो रेट, सी जे बल्कि यहाँ पे है इफ क्या है, सी जे माइनस सी ए है, ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट वेलोसिटी है, तो असल में ये एफ बी है, ये एफ बी, तो ये पावर के बराबर होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये थ्रस्ट, दिस इज थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट मास फ्लो रेट, दिस इज थ्रस्ट पावर पर यूनिट मास फ्लो रेट, दिस इज योर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो ये थ्रस्ट पावर आपके पास आ जाएगा पर यूनिट मास फ्लो रेट। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन टर्बोजेट इंजन वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन दिस थिंग, we want to have this CJ more and more, okay, we want to accelerate the fluid more, okay, and we want to get this difference, and we want to maximize this difference, right? Okay, m dot is, you know, having some normal value, okay. So this is actually this is the way that we can maximize the thrust force and similarly thrust power. In case of turboprop, okay, we are considering and we are utilizing this m dot, ठीक है, इसको जो है ना हम मैक्सिमाइज करते हैं। This should be somehow, you know, यहाँ पे क्या है, this CJ, so obviously CJ should be greater than CA, जो कि ये है, okay, but we are not capitalizing। इसको हम जो है ना क्या करते हैं, ये हम कोशिश नहीं करते कि वी वांट टू हैव मोर एंड मोर CJ, yes obviously we want this CJ is greater than CA, okay, so that it can clear it can move in the rearward direction, but we want to capitalize on the mass flow rate. The more is the mass flow rate pushed in the rearward direction, the more will be the thrust produced in the forward direction, ठीक है। तो दो चीजें जो है ना, अच्छा, लेकिन मोस्टली पर्टिकुलरली रॉकेट्स वगैरह में, ठीक है, ये तो चाहे टर्बोजेट हो या टर्बोप्रॉप हो, इस केस में बोथ विल बी सबसोनिक, बट फॉर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक एटसेट्रा वी वांट टू मैक्सिमाइज दीज टू, ये जो है ना मास फ्लो रेट, और इसको दोनों को हम मैक्सिमाइज करते हैं। तभी मैंने, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बात बताई थी। अच्छा, इफ यू लुक बैक टू दिस थिंग, वेयर इज दैट, हाँ, ये मैं आपको बता रहा था। We want, let's say for example, this is your turbojet, okay, somehow down here, okay, upstream you are having your turbojet here,
okay, and the exhaust is coming here. ये exhaust है. Now you want to accelerate this. You want to maximize this jet velocity. So you are giving this to, you know, this convergent divergent nozzle, okay, and at the exit, ये जो आपके पास होगा ना, this will be your CJ. ठीक है, मैंने आपको बताया था, there were actually some fighter aircrafts in the hangar and I showed some pictures over there. ठीक है, जो ब्लैंकिंग उसकी की गई थी, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपके पास कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है एग्जॉस्ट एग्जिट के ऊपर. ठीक है, नाउ we actually want to maximize the jet velocity at exit, and at the same time we want to maximize the mass flow rate. ठीक है, तो बैक प्रेशर की ऐसी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे ना, कंट्रोल करेंगे, ताकि आपके पास एग्जिट के ऊपर, ओके, बेशक यहाँ पे आपके पास द मास फ्लो इज टू मच एंड you obtain the maximum mass flow here and the maximum speed here, or the hypersonic speed here, but due to shock wave, if it is coming or it is traveling here, it is decelerated, and the mass flow is also, you know, adequate, or it is not maximum here. तो remember कि ये जो दो चीजें हैं ना, m dot and cj, we want to maximize those two things at the exit, so it will actually give you the benefit over here. ठीक है, of having more propulsive force and power respectively. बहरहाल you can see here what is this, okay, तो ये चीज़ आपने देख ली. बहरहाल ये जो है ना हमारे पास थ्रस्ट पावर है. यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें लिखी हैं, ये आप देख भी सकते हैं. दिस इज द रेट एट विच वर्क मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू कीप द एयरक्राफ्ट मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी सी अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिस्टेंस और ड्रैग. क्या किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? ये थ्रस्ट फोर्स के बारे में बता रहे हैं. अच्छा, व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स? इट इज बेसिकली दिस थिंग. ठीक है, थ्रस्ट पावर इट इज दिस थिंग. ओके, ये थोड़ा सा बताता है द नेटवर्क आउटपुट. अच्छा, दिस प्रोपल्सिव एफिशिएंसी, ये जो आपके पास प्रोपल्सिव एफिशिएंसी है, दिस वन, राइट, this propulsive efficiency, this is equal to thrust work अगर पर यूनिट मास फ्लो पर यूनिट टाइम आप लेंगे ना तो थ्रस्ट पावर हो जाएगा. यहाँ पे चलो हम थ्रस्ट वर्क लेते हैं. ठीक है, वर्क की बात हो रही है. एंड देन वी हैव वर्क आउटपुट फ्रॉम इंजन. वर्क आउटपुट फ्रॉम इंजन. इंजन जितना आपको वर्क आउटपुट देता है और उसमें से जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रोपल्सिव एफिशिएंसी. ठीक है, तो बहरहाल इसको थोड़ा सा आप देख लें कि द नेटवर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन इज गिवन बाय द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ये जो है ना CJ² माइनस CA² बाय 2. ठीक है, ये यहाँ पे है, ये वर्क ऑफ द इंजन है. अब इसको नीचे लेके आए ना, लाइक दिस, तो दिस इज द सेम थिंग. ठीक है, CJ² माइनस CA² बाय 2, दिस इज वर्क of the engine. ठीक है, right, and what is this? This is the thrust work per unit time, thrust power जिसको हम कहते हैं. I should write it per unit time, तो ये पावर हो जाएगा per unit time. तो ये वही चीज़ है. अच्छा, this is actually thrust power and this is the work of the engine, work output of the engine. ठीक है ना, ओके. तो बहरहाल इसको आप सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट दिस प्रोपल्सिव एफिशिएंसी इक्वल टू 2 into एयरक्राफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय जेट वेलोसिटी प्लस एयरक्राफ्ट वेलोसिटी. नाउ एक्चुअली दे हैव प्लॉटेड दिस equation 10.26. So actually they have different values of jet and aircraft velocity and they found out that this propulsive efficiency. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने शुरू किया है. This is the aircraft velocity in kilometer per hour and this is the propulsive efficiency. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप चले वो भी वैलिडेट कर सकते हैं. इफ यू रिमेम्बर हमने बात की थी, अच्छा, कि हम हाई स्पीड के ऊपर जो है ना टर्बोप्रॉप को क्यों यूज नहीं करते. तो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर आल्सो दिस इज हैविंग द propulsive efficiency. Now look, okay, let's say if your aircraft efficiency is the aircraft velocity is
let's say around what, around for example 450 किलोमीटर पर आवर एयरक्राफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो this is a jet engine and this is propeller type engine, a turbojet or turboprop. So you can see that turbojet is giving you around 45%, yeah, 42% efficiency, propulsive efficiency. But for the same speed, propeller type aircraft is giving you what? Around 85% efficiency. So better is to use turboprop for low speed. Okay, now go to, let's say for example 900. Okay, or even 9 को भी छोड़ दें, go to let's say for example this 1100 kilometer per hour. So the, if the aircraft speed is 1100 kilometer per hour, okay, let's say for example this turboprop will give you less than 40% efficiency, but turbojet is giving you what is around 70 plus this efficiency. Okay, so यहाँ पे शायद कहीं लिखा भी होगा कि 650 किलोमीटर पर आवर से 600 किलोमीटर पर आवर या 650 किलोमीटर पर आवर अगर आपके पास एयरक्राफ्ट स्पीड है, so it is recommended to use turboprop type engine and propeller type aircraft. And if the aircraft speed is beyond this 650 kilometer per hour or 700 kilometer per hour, so this is recommended to use jet type of engine. ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख लिया. And why? Because of having low propulsive efficiency for propeller type aircraft, turboprop engine and higher efficiency for jet engine. ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्यों लो स्पीड के लिए हम टर्बोप्रॉप को यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई propulsive efficiency जो है ना वो हमें ज़्यादा देता है और टर्बोजेट जो है वो नहीं देता. लेकिन हाई स्पीड के ऊपर जेट इंजन जो है वो हाई प्रोपल्सिव एफिशिएंसी एंड प्रोपेलर जो है वो लो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी देता है. और उसकी रीज़न मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, अच्छा, कि बिकॉज ऑफ शॉक वेव प्रोडक्शन एंड वो डेंसिटी की वेरिएशन मैंने आपको बताई थी. सो बिकॉज ऑफ दैट you cannot use them for high speeds and high altitude. Right. Okay. Discussing generally what jet propulsion is. So let us look at the types of jet propulsion. We have actually these types of jet systems. We have ramjet, it's the simplest type of jet engine. Okay. This is simple one. What is scramjet? We are not discussing this, but just I want to put it here so that you at least should know the name. This is supersonic, यहाँ पे लिखा भी है supersonic combustion ramjet है. अच्छा, डिस्कस करेंगे रेमजेट में, आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वी आर डिसेलरेटिंग द फ्लूइड. अच्छा, इसकी वेलोसिटी को जो है ना हम एयर वेलोसिटी को हम डिक्रीज करते हैं. इफ यू आर नॉट डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड और उसको जो है ना सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर ही आप कंबशन करते हैं तो उसको हम स्क्रैमजेट कहते हैं. ये सिर्फ जो है ना उसका फर्क है. ठीक है, टू गेट मोर वेलोसिटी. टर्बोजेट ये हमने पढ़ा भी है, टर्बोप्रॉप है, टर्बोफैन है, रॉकेट्स एक्सेट्रा है. ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली द डिवाइसेस where the propulsion used is a jet propulsion. ठीक है. अच्छा, ये भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये जो हमारे पास चाहे रेमजेट हो, टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप एंड टर्बोफैन, दे आर एक्चुअली एयर ब्रीदिंग. ठीक है, so they are taking the atmospheric air and oxygen from there and the combustion takes place. Okay, and the high temperature gases exhaust is moving in the rearward direction, and as a result the propulsion is produced in the forward direction, thrust is produced in the forward direction. So but यानी अगर आप जो है ना एटमॉस्फेयर, they cannot work in vacuum. ठीक है, या जिसको आप स्पेस कहते हैं, जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन नहीं होता, so they cannot work over there. Yes, rockets जो है ना ये आपने देखे होंगे, रॉकेट स्पेस शटल्स एक्सेट्रा, they can even go to Mars and they can go to they can get out of the atmosphere. Okay, and the earth crust उससे निकल सकते हैं. Why? Because they are having has its own oxygen source. ठीक है, as it may go to space with very low or no oxygen place. यानी स्पेस तक जब ये जाते हैं ना तो स्पेस में ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता है, बहुत कम होता. तो वहाँ पे जो है ना कंबशन कैसे होगा, तो इसके लिए इसके पास अपना जो है ना वो ऑक्सीजन सोर्स होता है. तो इसलिए जो है दे आर एयर ब्रीदिंग, मीन्स दे आर टेकिंग एयर and from air it is the oxygen is used for combustion, but here they are having its own oxygen
विद इट, ठीक है। रॉकेट्स में अपना ऑक्सीजन होता है। बहरहाल ओके, व्हाट इज रैम जेट? दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द रैम जेट प्रैक्टिकली, you know, this manufactured, okay, just I put figure over there, आपने इस किस्म की जो है ना चीज़ें देखी होंगी। बहरहाल द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जेट इंजन इज द रैम जेट, ठीक है। इसको ऊपर क्यों रखा गया है? बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। एंड लेटर ऑन सिंस वी डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, सो टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप एंड टर्बोफैन दे कम्स आफ्टर दिस रैमजेट, ठीक है। तो ये इससे जो है ना एक बेसिक फॉर्म है रैमजेट, ठीक है। अच्छा, किस तरह बेसिक फॉर्म है? यू सी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जेट इंजन इज रैमजेट, ठीक है। तो रैमजेट में क्या होता है? इन द रैमजेट द एयर इज कंप्रेस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर रिलेटिव टू एयरक्राफ्ट। दिस कंप्रेशन इज बेसिकली नोन एज व्हाट? रैम इफेक्ट, ठीक है। द वेलोसिटी दैट द एयर इज हैविंग, ओके, दैट वेलोसिटी इज बेसिकली, वेलोसिटी क्या है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं ना। वेयर इज दिस? तो काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी इज योर हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो अगर मास आप यूनिटी ले लें तो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो दे आर द रैम जेट्स आर यूजिंग velocity of the air for and convert this velocity or this kinetic energy to pressure energy, ठीक है। तो ये प्रेशर कंबशन के लिए हमारे पास, इफ यू रिमेंबर टर्बोजेट में हम क्या करते थे कि द कंप्रेसर्स आर यूज्ड एंड the compressors, low pressure or high pressure compressor, it compresses the working fluid, then it is combusted, and high pressure high temperature gases are then they are expanded in the turbines to give you the shaft, the power output at the shaft, and the exhaust gases, they are actually then allowed to move and to accelerate in the nozzles in order to give you the high jet velocity, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज है, right? The air is pressurized and the combustion takes place, but that pressurization of air is not because of the conventional compressors, but the kinetic energy is converted to pressure. किस तरह convert होता है? You can just see fuel is then burned in the, तो क्या होगा आपके पास कि the air comes here, let's say for example the air comes, अच्छा ये भी एक वो चीज़ है थोड़ा सा एडवांस है हमारे पास। ये नोज जो होता है ना, ये सुपरसोनिक कंप्रेशन करता है, इसके बाद जो डक्ट होता है ये सबसोनिक कंप्रेशन करता है। बट एनीवे द compression, the air is compressed one, okay, but not using those conventional compressors, but just having some diffuser type duct in order to compress that working fluid, and then combustion takes place. Fuel is then burned in the compressed air stream at approximately constant pressure, and the hot gases are allowed to expand through a nozzle, वही चीज है, reaching a high velocity backwards relative to the aircraft, ठीक है। तो क्या the compression takes place but not conventionally, just because of the conversion of the kinetic energy or the velocity to pressure, and that is actually known as ram effect. Ram effect क्या है? Conversion of kinetic energy to pressure energy, that is known as ram effect. Ram effect, and this is important, इसलिए जो है ना इसको हम ram jet कहते हैं, ram jet, ठीक है। इसको हम रैम जेट कहते हैं। रैम एयर टरबाइन का नाम भी आपने सुना होगा, रैम एयर टरबाइन। जो हमारे पास एयरक्राफ्ट में सेफ्टी होती है ना, तो अगर आपके इंजन जो है ना एयरक्राफ्ट के बंद हो जाए तो एक इंजन के ऊपर काम करता है, अगर एक इंजन जो है ना वो भी बंद हो जाए तो रैम एयर टरबाइन होते हैं। जस्ट टरबाइन जो है ना ड्यू टू रैम एयर, एयर आता है और टरबाइन जो है ना रोटेट करता है, देयर इज नो कंबशन नथिंग, ठीक है। तो वो उससे भी जो है ना थोड़ी सी थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद फेल सेफ सिस्टम ये होता है कि ग्लाइडर होता है, ग्लाइडर एक ग्लाइडर के तौर पे काम करता है। एंड इफ़ यू रिमेंबर जो हमारे पास एयर नेविगेशन होती है ना, वो अमूमन समंदर के ऊपर होती है, ओशन के ऊपर। एंड द रीज़न इज़ कि हमारे पास अगर इस तरह का कोई मसला आता है तो जहाज़ जो है ना एज अ ग्लाइडर जो है वो पायलट की एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो है ना समंदर में उसको उतार सकता है, लैंड कर सकता है और वहाँ से जो है ना ग्लाइड कर सकता है। और वहाँ पे जो है ना इसके बोट्स वगैरह होते हैं, तो लाइफ बोट्स
या लाइफ जैकेट्स वगैरह जो है जो हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, राइट। सो दैट इज बेसिकली रेम एयर टर्बाइन, वहाँ पे भी होता है। एनीवे अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना आप देख लें कि हमारे पास जो रेम जेट है वो उसका डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, और टीएस डायग्राम के ऊपर भी दिस इज एक्चुअली योर रेम जेट, ठीक है। This is the ear inlet, okay, and this is section 1.1. Can you see that this is actually have this is a diverging duct, ठीक है, ये डाइवर्जिंग डक्ट है। तो अगर आपके पास सबसोनिक फ्लो है ना, सबसोनिक फ्लो, ठीक है, ये सिंपल वन, सबसोनिक फ्लो है तो डाइवर्जिंग डक्ट ये क्या करता है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ डिफ्यूजर। So this is basically your diffuser section. Okay, so the air comes here, and when it passes through this diffuser section, in diffuser the pressure increases and the velocity decreases, or the velocity is converted to pressure in the diffuser section. So here the ram effect takes place, okay, इसको हम कहते हैं ram compression. So the compressed air is then combusted at, let's say, constant pressure at this section 2, and hot gases are then allowed to expand through the nozzle, ये nozzle है, okay, and you are having the jet velocity over here, and the more is the jet velocity in the rearward direction is the reaction, there will be velocity of the ram jet in the forward direction, sorry, there will be a thrust in the forward direction, which gives you, or which gives this ram jet a velocity that is denoted by CA, ठीक है। टीएस डायग्राम के ऊपर भी आप देख सकते हैं 1 to 2 इज कंप्रेशन, बट रेम एयर कंप्रेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है, नॉट यूजिंग दैट टर्बाइन, राइट। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई द वर्क कंज्यूम बाय द कंप्रेसर, नो, दिस इज एक्चुअली द कंप्रेशन, ओके, बिकॉज ऑफ दिस रेम एयर। 2 to 3 इज कंबशन, एंड 3 to 4 इज एग्जॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो रेम जेट होता है ना, दैट इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट में भी यूज हो सकता है, ठीक है, यूज इन द एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल प्रोपल्शन, एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है और मिसाइल प्रोपल्शन के लिए अमूमन यूज होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के दौरान जो है ना, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, राइट। मिसाइल जो है ना उसको एज अ कैरियर यूज होता है, यू कैन सिंपली से कैरियर, एज अ कैरियर जो है ना, मिसाइल को कैरी करने के लिए जो है वो रेम जेट को यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई ये तो सबसोनिक फ्लो है, ठीक है, तो हमें तो मिसाइल को ज़्यादा, जिस तरह हमारे पास ये शाहीन है और ये होरी है और ये हतफ है और ये फलाना है, तो इसमें जो है ना सिमिलरली एयर टू एयर है, एयर टू ग्राउंड है, राइट, ग्राउंड टू एयर है, एटसेट्रा। तो वी हैव एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज थिंग्स, एंड द स्पीड इज you know, like previously, let's say for example we were having low speed missiles, okay, तो उस मिसाइल लो स्पीड का क्या मतलब है, मिसाइल बेसिकली एक्सप्लोसिव, ठीक है, जो उसका कैरियर होता है ना वो बेसिकली रेम जेट या स्क्रैम जेट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो पहले सब सोनिक लेट से होता था, उसके बाद जो है ना सुपर सोनिक आ गया, ठीक है। तो कैन यू सी दिस नोज, ये जो नोज है ना, तो उसको थोड़ा सा, इसको अगर आप एक्सपेंड करें ना इस तरह, जिस तरह ये था, दिस नोज, दिस वन, दिस इज एक्चुअली सुपरसोनिक कंप्रेशन, ये नोज करता है, अच्छा, सुपरसोनिक कंप्रेशन। उसके बाद सबसोनिक कंप्रेशन जो है ना वो ये चीज़ करता है, ठीक है। ओके, तो बहरहाल ये दिस इज अबाउट रेम। अच्छा, इसके बारे में बल्कि यहाँ पे लिखा भी है, अच्छा, एन एयरक्राफ्ट पावर एंटायरली बाय रेम जेट वुड रिक्वायर एन, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल if your inlet velocity is 0 for example or very low, अगर आपके पास जो है ना ये इनलेट वेलोसिटी जो है ना ये इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो देयर विल बी नो सफिशिएंट रेम एयर कंप्रेशन एंड द ओवरऑल रेम जेट वेलोसिटी विल बी वेरी लो। बात समझ आ गई? आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव वेरी लो इनलेट वेलोसिटी, so the ram air compression or the pressure ratio will be very small, ये pressure ratio है ना ये इतना छोटा होगा, बहुत small होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो ram air compression है it is very low, right,
and air, you are actually having combustion at very low pressure, which is not efficient. Okay, so as a result, this ramjet velocity will be very low, and ultimately this ramjet will be not an efficient and inefficient thing. Okay, inefficient होगा. तो इसीलिए जो है ना फिर क्या होता है कि इसको जो है ना बूस्टर हम यूज करते हैं इसके लिए. मीन्स दैट an aircraft powered entirely by ramjet would require an auxiliary power supply for starting in order to attain the velocity necessary to give a large enough ram compression. बात समझ आ गई. इसको फायर किया जाता है. ठीक है, this ramjet is fired. ठीक है, फायर का क्या मतलब है कि ये जो है ना वो वेलोसिटी अटेंड कर ले. ठीक है, जिसके ऊपर रेम कंप्रेशन होती है. राइट, तो वेलोसिटी जब अटेंड कर लेता है ना रेम एयर कंप्रेशन जिसके ऊपर होती है, तो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. रेम एयर कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट एंड एयरक्राफ्ट वेलोसिटी, दिस रेम जेट वेलोसिटी. ठीक है, सो इट इज एक्चुअली फायर्ड एंड इट दे आर हैविंग बूस्टर्स. तो बूस्टर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, but one of them is like this. Okay, ये भी एक booster है. You can see that where is this? Can you see this is actually this is ramjet and turbojet combined. Okay, so look, this is the diffuser section. Okay, diffuser section, right? And can you see these bypass flaps? यहाँ पे doors होती है bypass. ये जो आपके पास है ना bypass flaps या doors होती हैं. ठीक है, ये फ्यूल इंजेक्टर है, ये जो है ना फ्लेम होल्डर है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट है, नोजल है और एग्जॉस्ट है हमारे पास. राइट, सो बाईपास फ्लैप्स अलाउ फ्लो इनटू टर्बोजेट. तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली because to initiate the ram air compression you need to give certain velocity to this ram jet. तो वो बेसिकली ये बूस्टर है. ये टर्बोजेट जो है ना इस केस में क्या है, बूस्टर है. व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे जो है ना आपके पास these gates are opened. ये गेट्स जो है ना ये ओपन होते हैं. तो एयर instead of directly going to this combustion compartment, ठीक है, ये जो कंबशन या इंजेक्टर्स है हमारे पास, फ्यूल इंजेक्टर्स, डायरेक्टली यहाँ पे गोने के ये यहाँ पे नहीं जाता. ठीक है, बट इट गोज टू टर्बोजेट. ठीक है, and you know very well in turbojet we have conventional compressors which compresses the air, and then combustion takes place, and then the exhaust is here. Okay, and obviously the exhaust here is because यहाँ पे तो compression conventional compression है, तो exhaust is then accelerated in the nozzle and it gives velocity to this whole system. Okay, now when it gains its velocity, the flaps are these bypass flaps are they are closed. ये जो है ना इसको close किया जाता है. ठीक है, and the air is not going to turbojet but it is directly, because यहाँ पे अब velocity क्या है, velocity of this is sufficient to have the ram effect over here. तो यहाँ पे जो है ना आपके पास ये in this diffuser because like for example initially when it is fired it is having very low this velocity, but after some time it gains velocity and this C1 is now more. It can take this as a ram compression, and now the turbojet is not working. For that reason this is actually a starter, a booster. ठीक है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है. बात समझ आ गई आपको. तो ये जो है ना अकॉर्डिंगली बेस्ट टर्बोजेट काम करता है. ठीक है, तो इसलिए जो ये बताता है कि इट इज ऑक्सिलरी पावर. ये अब ये ऑक्सिलरी पावर के तौर पे यूज होता है. ठीक है, दिस वन, दिस टर्बोजेट इज ऑक्सिलरी. तो ये जो है ना जस्ट इसको स्टार्ट करता है, फिर जब ये रेम एयर कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये खुद ब खुद जो है ना टर्न ऑफ हो जाता है. अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने नेट से लिया था जस्ट टू हैव यू to put you on track. Ramjet के बारे में हमने बात की. Ramjet develops no static thrust even the system is a ground or ये static thrust क्या मतलब है कि अगर आपके पास ramjet जो है ना वो ग्राउंड पे खड़ा है तो वो जो है ना आपको thrust प्रोवाइड करके नहीं दे सकता. and the reason I told you because there is no ram air compression. बात समझ आ गई आपको ना. ठीक है, कि you need to fire it, you need to give it a certain velocity in order to initiate this ram air compression. तो ये जो है ना एक इसका लिमिटेशन है, आप देख सकते हैं. ramjet develops no static thrust.
and it relies on ram compression. Why? Because it requires high speed in order to accelerate to have इसके speed होनी चाहिए. The speed with which this ramjet is moving, with the same speed the air will enter the ramjet and compression will takes place. ठीक है, तो ये जो है ना इसका एक limitation है. Performance depends on increase in stagnation temperature across burner combustor. ठीक है, तो ये भी जो है ना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कंबस्टर का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा होगा. ठीक है, राइट. एंड एफिशिएंसी थर्मल प्रोपल्सिव हो या ओवरऑल हो, इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्लाइट मार्क नंबर. वो तो ऑब्वियस है कि जितना मार्क नंबर आपके पास ज़्यादा होगा ना, उतना मार्क नंबर अगर आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल 1 है, तो इसका मतलब ये है कि द एयर एंटरिंग द डिफ्यूजर सेक्शन विद सोनिक वेलोसिटी. सो सोनिक वेलोसिटी इज अराउंड 340 मीटर पर सेकंड, तो इससे ज़्यादा है. अगर मार्क नंबर जो है ना ग्रेटर देन 1 है या मार्क नंबर इक्वल टू 2 है, यू कैन सी दैट एंट्रेंस द वेलोसिटी एट एंट्रेंस or at entry is increased, and that is converted to pressure. So more pressure ratio will be here, and similarly you can increase the aircraft this ramjet velocity. ठीक है. अच्छा, तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, ताकि हमारे पास क्या हो, अब जहाज आपने खड़ा भी देखा होगा, वहाँ पे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ग्राउंड रन जब हम करते हैं ना, तो ये वहाँ पे ब्रेक्स लगाते हैं, थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इन ड्रॉबैक्स को जो है ना या लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई नेक्स्ट स्टेप इज वी डिजायर एन इंजन दैट डेवलप स्टैटिक थ्रस्ट. तो वो इस तरह का हमारे पास जो है ना इंजन हो जो कि स्टैटिक थ्रस्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. मीन इट इज ग्राउंडेड बट इट इज प्रोड्यूसिंग थ्रस्ट. इट डजंट रिक्वायर बूस्टर, सिंपली स्पीकिंग. ठीक है, एक ये चीज पुट इन अ डिवाइस. अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई स्टैटिक थ्रस्ट के लिए हम क्या करेंगे. ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना होगा, पुट इन अ डिवाइस टू मैकेनिकली कंप्रेस एयर. रेम एयर कंप्रेशन नहीं, इंस्टेड ऑफ रेम एयर कंप्रेशन वी नीड अ मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ द एयर. तो कंप्रेसर हम लगाते हैं यहाँ पे. तो एक और पुट इन अ डिवाइस टू पावर कंप्रेसर. तो कंप्रेसर को पावर कहाँ से मिलेगी. ठीक है, वो जो है ना टरबाइन देगा. तो इसका क्या मतलब है कि in order to overcome the limitation of having no static thrust in the ramjet, you need to install a compressor and a turbine inside the ramjet. ठीक है, सो वहाँ पे जो है ना फिर जब ये चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो फिर हमारे पास बात आती है टर्बोजेट के ऊपर. तो टर्बोजेट में क्या है, यही चीज़ है ना कि अगर आप जो है ना ये रेमजेट के अंदर जो है कंप्रेसर्स और टर्बाइंस डाल दें, ठीक है, और दरमियान में कंबशन चेंबर हो, तो दैट इज बेसिकली वो टर्बोजेट. तो टर्बोजेट जो है ना इससे इवॉल्व हुआ है टू ओवरकम दिस थिंग, राइट. टर्बोजेट के बारे में चूंकि हमने पढ़ा है, तो इवन आपके बुक में भी जो है इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया गया, बट जस्ट देयर आर सम some of the changes that you need to make to those formulas, and those are related to what, to मैंने आपको बताया था that the formulas we developed in chapter 9, okay, we were having temperatures over there, and those temperatures and pressures were static temperature and pressures, but in essence the velocity. अब ये turbojet है ना, let's say this is a turbojet engine, right, this is your cold section, this is hot section, right, this is your combustion chamber, this is compression. ठीक है, ये आपके पास जो है ना this is low and this is high pressure compressor, and this is your combustion, this is high pressure turbine, let's say, या turbine, and this is the nozzle. ठीक है, या exhaust. तो ये जो है ना आपके पास से टर्बोजेट इंजन है. अच्छा, ये दो चीज़ें यहाँ पे इनलेट इनटेक और एग्जॉस्ट. ठीक है, ये दोनों यहाँ पे है. ठीक है, एग्जॉस्ट इज एक्चुअली मूविंग थ्रू द नोजल and intake is in the diverging duct. ठीक है ना, diverging duct में जो है ना ये intake हम करते हैं. Why diverging? Because it actually increase, यहाँ पे है भी. If you look to this thing, अच्छा यहाँ पे जो है ना अभी हमारे पास velocity क्या है in the turbojet. ठीक है, now inlet velocity you cannot neglect that. ठीक है, because the turbojet engine they are moving with the Mach number, yes, subsonic maybe, or even up to sonic speeds. But 340 meter per second, 200 meter per second is not negligible as a
is compared to jet speed. So इसलिए जो है ना हम इसको अब निग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो इससे क्या मतलब है कि वेलोसिटी इफ इट इज नॉट निग्लिजिबल, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ना इनलेट के ऊपर अगर ये निग्लिजिबल नहीं है, so you cannot use static temperature and pressure, but you need to use what? You need to use a stagnation. अब ये velocity जो है ना c, in case of turbojet or ramjet or something like this, it is not negligible. So instead of t you need to use stagnation temperatures, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो फार्मूले जो हमने ऑलरेडी डेवलप किए हैं, आपकी बुक में भी इस तरह किया, अच्छा बस उन फार्मूलों को जो है ना आपने अल्टर करना है, चेंज करना है, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर, ये मैंने बल्कि यहाँ पे बताया भी था कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज हैविंग व्हाट, T2s माइनस T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, राइट। लेकिन फिर क्या होगा, T2s की जगह T02s, स्टेग्नेशन टेम्परेचर, ठीक है। And same is the case for isentropic efficiency of the turbine. T3 minus T4 by T3 minus T4s था, तो अब T03 होगा हमारे पास, ठीक है। ये दो चीज तो हमने देखी थी। एक जो है ना आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द इनटेक डक्ट है, ये मैं आपको डिफ्यूजर का बताया, और ये एक जो है ना ये एग्जॉस्ट डक्ट का है इसका, ठीक है। इफ यू लुक एट द टीएस डायग्राम, 0 इस जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। 0 to 1 is a pressure increment, but where? In the intake duct. Intake duct diffuser होता है हमारे पास, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज है थोड़ा सा, और उसके बाद जो है दिस इज कंप्रेशन इन इनसाइड द कंप्रेसर, ठीक है, कन्वेंशनल कंप्रेसर, एग्जिट फ्लो कंप्रेसर। 2 to 3 is the combustion process. 3 to 4 is expansion inside this turbine, which gives you the power output, and 4 to 5 is expansion, but in the jet pipe duct or in the exhaust duct. So this gives you the propulsion, and this gives you the useful power output. अच्छा, turbojet engine में ideally होता क्या है कि mostly the power produced, ये हमने पढ़ा भी था, the power produced by the turbine is utilized just to run this compressor, that's it, ठीक है। बाकी जो thrust है ना, yes, if you want to use it for some other purposes, so this should be a little bit higher than or more than this one, okay, but if you are just using it purely for thrust production, तो बस ये जो है ना इसको चलाएगा, it runs this compressor, and thrust produced will be when the high temperature, high pressure gases expands inside the nozzle, ठीक है। तो ये भी compression है, ठीक है, this compression, but this compression is due to this diverging section of the intake duct, ठीक है। और हाल इसको आप देख लें। उसके बाद लास्ट जो है ना हम थोड़ा सा प्रेशर थ्रस्ट को देख लेते हैं। प्रेशर थ्रस्ट बेसिकली ये है, ये जो हमने बात की थी ना कि द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एयरक्राफ्ट, ठीक है, या फॉर द एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज टोटल थ्रस्ट इज योर मोमेंटम थ्रस्ट प्लस प्रेशर थ्रस्ट, राइट। मोमेंटम थ्रस्ट क्या है, यू आर एक्सेलरेटिंग द वर्किंग फ्लूइड, and the rate of change of momentum is over there, and due to that rate of change of momentum the thrust is produced, इसको हम कहते हैं मोमेंटम थ्रस्ट। प्रेशर जो हमारे पास है ना प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, लाइक इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप, ठीक है, तो ये जो है ना ये फ्रंटल व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो ये एग्जिट एरियाज हैं इंजन के, ठीक है, A2 नोजल्स की, और ये जो है ना हमारे पास क्या है, इनलेट या इनटेक है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप, ठीक है ना, ये जो आपके पास नोजल का एग्जिट है, ये तो चलिए हमने अभी देखा भी है उस वहां पे, नोजल का जो एग्जिट एरिया है ना, एग्जिट है, ठीक है, इन पी एफ इज इक्वल टू पी ए होता है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू पी ए। तो यहाँ पे जो भी चीज होगी दिस इज थ्रस्ट, फोर्स होगा, यहाँ पे ये भी हमारे पास फोर्स है, ठीक है। तो बहरहाल द फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आर द थ्रस्ट प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे जो आपके पास नोजल है ना, नोजल, बल्कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया भी है, आप यहाँ पे देख लें कि भाई द प्रेशर थ्रस्ट बेसिकली क्या करता है कि दिस इनेबल्स द एयरक्राफ्ट टू मूव फॉरवर्ड। थ्रस्ट बेसिकली एयरक्राफ्ट को मूव फॉरवर्ड देता है। जिस तरह आपके पास
मोमेंटम थ्रस्ट जो है ना, इट गिव्स यू द फॉरवर्ड वेलोसिटी टू द एयरक्राफ्ट। इस तरह प्रेशर थ्रस्ट भी जो है ना ये फॉरवर्ड वेलोसिटी देता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस यू नो दिस प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, कि आपके पास जो असल में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये शो किया भी है कि हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज प्रेशर थ्रस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो किस तरह है। लुक, यहाँ पे आप देख लें तो दिस इज द इनलेट, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका मिरर इमेज यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दिस इज द इनलेट एरिया। ठीक है, the control value, this is the exit, this is section 1 and this is section 2, right? The fluid is accelerated। यहाँ पे फ्लूइड जो है ना, हम कहते हैं ना बार बार कि फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड, फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड। अब who accelerates this fluid? Because to give acceleration to anything you need to have a force। ठीक है, सो ये वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेट करता है फ्लूइड को। और इसका जो अपोजिट होगा ना, ये बेसिकली वो थ्रस्ट होगा। ठीक है, सो दिस फोर्स एक्सेलरेट्स द फ्लूइड एंड एज अ रिजल्ट एंड एज अ रिएक्शन द थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। अब ये फोर्स हम जो एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं ना, दिस फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट? दिस इज एक्चुअली व्हेन द मास इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड इट डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर हम इस तरह लिखते हैं। अच्छा, remember this is the comprehensive form, summation of forces acting upon the body equal to d by dt of mv। बात समझ आ गई? तो एम बी से क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसका मतलब ये है कि डी यहाँ पे ये एम डॉट हो जाएगा। ठीक है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये m1 डॉट होगा, ये m2 डॉट होगा, बट दे आर नॉट, दे आर बेसिकली डिफरेंट। ओके, क्योंकि ये एयर का है, एयर साइड के ऊपर, और ये गैस साइड के ऊपर है। लेकिन बिकॉज हियर यहाँ पे ये m.2 जो होगा ना थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन। लेकिन इसको निगलिजिबल है हमारे पास, तो इसको जो है ना हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये m डॉट आपके पास हो जाएगा, और d by dt that is basically change in the velocity। ये चेंज इन द वेलोसिटी है हमारे पास। बात समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये जो वेलोसिटी चेंज है, ठीक है, ये बेसिकली आपको प्रेशर थ्रस्ट देता है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स आप ये भी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर है डाउन स्ट्रीम आपके पास प्रेशर जो है ना उसे कम है। इनकी वजह से जो आपके पास जो प्रेशर ड्रॉप है ना, इसकी वजह से भी ये प्रेशर प्रोड्यूस होता है, सॉरी थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। दैट इज बेसिकली योर प्रेशर थ्रस्ट। सो जो आपके पास टोटल थ्रस्ट होगा दैट विल बी m डॉट Cj minus Ca, that is the momentum thrust, and A2 P2 minus Pa, this is atmospheric and this is exhaust में। अगर ये दोनों सेम है ना तो प्रेशर थ्रस्ट जीरो होगा ना। अगर P2 लेट्स से फॉर एग्जांपल somehow P2 जो एग्जिट के ऊपर प्रेशर है P2, this is equal to Pa, which is in case of subsonic flow। अच्छा, इसीलिए आप जो थ्रस्ट का फार्मूला अमूमन हम लिखते हैं ना वो यही लिखते हैं, दिस वन, टोटल थ्रस्ट इज इक्वल टू m डॉट Cj माइनस ये प्रीवियसली भी हमने लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इफ व्हाट इज एक्चुअली फॉर सबसोनिक फ्लो। ठीक है, एग्जिट के ऊपर आपके पास जो होगा ना, ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बराबर है, ठीक है, या इसके करीब करीब है, तो ये क्या मतलब है कि ये डिफरेंस जो है ना जीरो हो जाएगा, और ये पूरा आपके पास प्रेशर थ्रस्ट जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इट विल बी हैविंग अ वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द टोटल थ्रस्ट। ठीक है, यस, बट फॉर द केसेस वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी मच लेस देन द एग्जिट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एट एग्जिट, तो फिर जो है ना यू नीड टू लोकेट द प्रेशर थ्रस्ट आल्सो। लेकिन इस प्रेशर थ्रस्ट की वैल्यू जो है ना बहुत ही कम होती है। ठीक है, बट एनीवे इफ यू वांट टू प्रिसाइजली मेजर द टोटल थ्रस्ट, दैट इज द समेशन ऑफ यू नो दिस। अब ये टोटल थ्रस्ट ये कहाँ से आया है आप कहेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके दरमियान, ये यहाँ से आया। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना समेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में, ये तो ये चीज़ आ गई ना आपके पास, ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से ही आई है। अच्छा, यहाँ से ही आई है, तो m डॉट v2 माइनस v1 आई शुड राइट इट m डॉट Cj माइनस Ca, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो ये असल में ये है, राइट। नाउ समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दिस इंजन, ठीक है। तो उसको जब आप देखेंगे ना, तो ये हमारे पास जो फोर्सेस हैं जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बहरहाल आपके पास एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे ना, तो आपके पास ये समेशन ऑफ फोर्सेस से जो है ना, ये इक्वेशन यहाँ से आई है, ठीक है। सो द टोटल दस इज इक्वल टू मोमेंटम दस प्लस प्रेशर थ्रस्ट। फॉर सबसोनिक फ्लो दिस इज नेग्लिजिबल बिकॉज मोस्टली दिस इज इक्वल, and for supersonic and hypersonic flow this is considerable, and this is basically the pressure thrust, ठीक है, due to pressure difference। ये भी आपके पास ये चीज़ है ना, A2 P2 क्या इस तरह मैंने आपको बताया कि if ये thrust है, चाहिए force है, all these are forces, this is force, this is force, this is force, right। इसीलिए समेशन ऑफ फोर्स ये आपके पास जो है ना, ये इनर्शिया फोर्स के बराबर है, राइट। इस तरह तो ये जो है ना पी ए है, आई शुड राइट इट P2 A2, आई शुड राइट इट A2 PA। तो ये जो है ना प्रेशर थ्रस्ट है आपके पास, इसको भी थोड़ा सा आप देख लें। ओके, ये जो है ना दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल ये मैंने इसलिए छोड़े हैं कि दीज एग्जांपल्स आर एग्जांपल 10.6 इज अबाउट टर्बोजेट इंजन एंड एग्जांपल 10.7 इज अबाउट द टर्बोप्रॉप इंजन। थोड़ा बहुत हमने इसको डिस्कस किया है। आप जो है ना मेरे ख्याल में इसकी एग्जांपल शॉर्ट एग्जांपल है, इसको कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये होगा, look what will be the difference, previously you solved the problems of turbojet engine, right, but over there we were talking about static temperatures, static pressures। यहाँ पे जो है वो stagnation temperature and pressure होगी एक। दूसरा ये कि यहाँ वहाँ पे हमने इनटेक और जो एग्जॉस्ट डक्ट है, ठीक है, या जेट पाइप की जो है एफिशिएंसी वगैरह, ये हमने डिस्कस नहीं की थी। यहाँ पे जो है ना इसको डिस्कस किया गया है। सेम इज द केस विद द टर्बोप्रॉप इंजन आल्सो, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स। अच्छा, टर्बोफैन इंजन भी है, उसकी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट यू नीड टू लुक एट दैट थिंग, सम थ्योरी इज इन्वॉल्वड ओवर देयर, सो यू कैन लुक एट दैट थिंग इन योर बुक एंड इट कंक्लूड्स चैप्टर 10, ठीक है। So if I summarize what we studied in chapter 10 very quickly, so if you remember, we talked about generally what nozzle and diffusers are, what should be the shape of nozzle and diffuser for supersonic, hypersonic and subsonic flow, and similarly we talked about how to shape the nozzle, what will be shape of the nozzle for a particular velocity, and then we talked about the critical pressure ratio, temperature ratio, critical velocity, etc. Then we talked about nozzles of the design condition under expansion or expansion case, and obviously some related topics to um, nozzle efficiency, okay, and coefficient of discharge, etc., coefficient of velocity, right, and similarly we talked about the mass flows also, and then we discussed about the stagnation conditions, okay, and after that we discussed about the application of nozzles in jet propulsion. So we talked about ramjet and how it works, okay, and the limitations, etc. And similarly we talked about turbojet, turboprop, and those engines, okay, and at the end we talked about the this pressure thrust, etc. सो ये जो है ना आप कर लें एग्जांपल्स वगैरह, इसके बारे में जो रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है मैंने आपको समराइज करके दे दिए कि भाई ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। सो द प्रॉब्लम्स इन द बुक इफ दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी स्टडीड, सो वो जो है ना आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। सो एक्चुअली दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 2, राइट। इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना फिर हम लेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, बट रिमेंबर यू नीड टू लोक एट the lecture slides. Similarly, you need to listen to the recorded lecture and you need to consult your book also. And if you don't understand them, we can discuss. I will try to answer. Right? Okay. Thank you.